tkinter window. So what is the first line you have to write down? Import tkinter as a tk. Import tkinter as a tk. Then next line, Top equals to tk.tk. top is equals to tk.tk. Then we want to create a label. What is the line? L1 equals to tk.label in bracket top comma text equals to whatever text we want to enter. Yes, whatever the text we want to enter, we just have to work out about that one. Then what the next story we have to do? What the next story we have to execute? Now we just comes to know how to work out with the on click of the button. For that purpose we have to create a button as well. Okay, हम लोगों को बटन क्रिएट करना होता हम लोगों को फंक्शन क्रिएट करना होता है. How we are creating the function? We can just create the function by using simple story, that is def f1. हम लोगों को फंक्शन को डिफाइन करना होता है, हम लोगों को फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है. सो हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. सो हम लोगों को फंक्शन को डिफाइन करना होता है, हम लोगों को फंक्शन को वर्कआउट करना होता है. सो व्हाट द स्टोरी, हाउ वी आर वर्कआउट फॉर दिस एग्जीक्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are just write down id, we are just write down the creating of function. How we can create a function? Def function name, opening bracket closing bracket colon, and we have to call that function by using what? We have to call that by using command line, right? Now, yes or no? We have to just Yes. pass over there as an command, and we just work out with this one. So this is the thing we have worked out. I have told you, we are executed the program which will help us to go for the comparing the element, getting the element and all. Now what the next story we have to do? As I told you, we want to perform the complete registration form. We just want to execute the complete registration form. So here, to work out with this, we have to go for the extraction of the data from text box. We want to work out for the extraction of the data from the text box. So here we just create a text box. E1 is equals to let's say t1 dot. How to create a text box? What is the line? Entry 1 equals to tk.entry in bracket top. In bracket t1 dot entry. We are write down here t1 dot entry in bracket what? We are write down here top. Okay. Then I write down here e1 dot pack, opening bracket closing bracket. Okay. So if I run this, what I am getting? I am just getting the one simple text box. I do one thing, I apply the geometry to this one so that it is visible properly. Top dot geometry in bracket 400 by 400, double quotes 400 by 400. This is the window size I am given. Now let's run it. Now we are just getting this text box, okay, and we are getting one button. Now what we have to do, what we have to execute. अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और इसे एग्जीक्यूट करना है, सो दैट बाय यूजिंग दिस यू कैन क्रिएट कैलकुलेटर और मेनी मोर थिंग्स. आप इसका यूज़ करके कैलकुलेटर और बहुत सारी चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सी व्हाट आई वांट टू डू. यहाँ पे मैं जो लिखूँगा वो बटन क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट होना चाहिए. एम आई क्लियर गाइस? मैं यहाँ पे जो लिखूँगा वो बटन क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट होना चाहिए. बटन क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट होना चाहिए. तो हम लोग इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो हियर अब बटन क्लिक करने के बाद होना चाहिए मीन्स व्हाट? वी हैव टू यूज़ इट इनसाइड द फंक्शन, राइट? हमें इसे फंक्शन के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा. हमें जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है वो फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी. सो हाउ आई कैन वर्कआउट, हाउ आई कैन एग्जीक्यूट? सो आई सिंपली गोइंग टू बी वर्कआउट लाइक, अब मुझे जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, देखिए अगर आपको कभी भी टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना रहा तो व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड वी हैव टू राइट डाउन? वी हैव टू सिंपली राइट डाउन e1 डॉट गेट, e1 डॉट गेट. सो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम फर्स्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स हैविंग नेम e1. तो मैं यही से डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा एंड आई जस्ट राइट डाउन हियर यू डेटा इज इक्वल्स टू e1 डॉट गेट. ओके, मैंने क्या लिखा है? यू डेटा इज इक्वल्स टू e1 डॉट गेट. मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? e1 में से
यानी यू डेटा इज इक्वल टू E1 डॉट गेट, यानी यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिलेंगी. ओके, आई विल जस्ट गेट वैल्यू, I will just get the value of from E1 here and which is going to be stored into the U data and then going to be print. यहाँ पे मैं print कर दूंगा, just going to be write down simply print print in bracket, just write down here U D A T A U data, just bracket complete. Now see here we have write down U data, just bracket complete. Now what we have to do, what we have to execute. Now let's run and check. सी मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा IBASE एंड जस्ट क्लिक ऑन सबमिट. सो सी इट विल प्रिंट IBASE. मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ABCD तो इट विल जस्ट गिव मी द ABCD. एम आई क्लियर गाइस? यस सर, क्लियर ना? अगर हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, E1 डॉट गेट. E1 क्या है? तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है. Am I clear now, guys? How we can? Yes, sir. Okay. Yes. So just execute. Go fast. कीजिए वर्कआउट. Just simple logic we have to work. You have to take the two text boxes. आप दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे और दो टेक्स्ट बॉक्सेस से आप लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोनों की एडिशन होनी चाहिए. दोनों टेक्स्ट बॉक्स है, दो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और बटन पे क्लिक करने के बाद दोनों की एडिशन होनी चाहिए. We have to go for the simple execution. You have to take the two text boxes. दो text box आप लोग, क्या आप लोगों को दो text box से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? I will take here E2 is equals to T1 dot entry. I am taken the second text box in bracket top. Okay. Then I write down here E2 dot pack. So if I run this, what is the output we are getting? Getting two text boxes. Now how we can extract? How we can work out? How I can extract the data? How I can work out? So I write down here number 1, let's say num1, and I am taking here again num2. Okay, I want to extract data from second text box, so I write down here E2 dot get.
ओके, पहले टेक्स्ट बॉक्स से डेटा चाहिए था, आई राइट डाउन हियर e1 डॉट गेट. आई वांट डेटा फ्रॉम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, आई राइट डाउन e2 डॉट गेट. आई राइट डाउन हियर e2 डॉट गेट. नाउ what the next thing we have to work out? We just want to perform the addition of this. So here what the thing we want to work out, what the thing we want to execute. So I just perform here num3 is equals to num1 plus num2. मी num1 plus num2 करेल आणि num3 ला इथे प्रिंट करेल. I just print here num3. So what is the output we are getting? See, let me run it again. Let me close it and run it again. So what is the output I am getting? Here I write down 12 and here I write down 34. Click on submit. So I am getting 1 2 3 4. So what to do? काय करावं लागेल? Yes guys. सर इंटीजर लगाना पड़ेगा. Yes, we have to convert it into what? इंटीजर. Integer. Clear na? We have to convert it into what? Integer. So how we can convert it into the integer? In what way we can convert it into the integer? So here, what is the way to be converted into the integer? Let me explain you. See, I need to work out. कैसे convert करेंगे integer में? Can I write down like that? int. Hope you remember. We are already worked out with this, huh? Integer. Now let me run and check will it give the same addition subtraction or not. 12 फिर उसके बाद 45. Now let's see what we are getting. We are getting 50. Yes sir. 7. Clear? Yes sir. Yes sir. Execute those who are not completed. Go fast. Let me know once it is done. चलो done. Next program we have to do. Is it done, guys? Yes sir. Okay. Yes sir. Now Yes, the sir. next program you have to do. Take again 2 text boxes. Take first name as an admin, second name as an admin. आप लोगों को 2 inputs लेने हैं admin. Okay. So if value of first text box is admin and second text box is also admin, then you have to just work out here or give the message valid user. Okay, else invalid user. Am I clear? Yes sir. Okay now. Yes sir. Go fast. The simple program to execute. In what way we can work out, in what way we can execute, let me explain you guys. Let me explain you.
So here, to go for its execution, we have to extract the data from both text boxes, but we no need to convert it into the integer. कारण मला जो डेटा पाहिजे तो टेक्स्ट फॉर्ममध्येच पाहिजे. मला जो डेटा पाहिजे तो टेक्स्ट फॉर्ममध्येच पाहिजे. सो आय एम जस्ट राईट डाऊन हिअर सिम्पली इन अ टेक्स्ट फॉर्म. ओके. देन हिअर व्हॉट आय वॉन्ट टू डू, इफ जर कोणाची व्हॅल्यू num1 ची व्हॅल्यू ॲडमिन असेल, नाही इक्वल्स टू नाही. जर तुम्ही इक्वल्स टू लिहाल ना तर तुमचा लॉग इन पॅनल कुठल्या याच्यावरती लॉग इन होईल. जर समोरच्याने 2 नेम सेम इनपुट दिलेत तर कुठल्याही याला लॉग इन होईल. ओके ना. सो यू हॅव टू थिंक अबाउट दॅट. त्याच्याबद्दल थोडासा विचार करायचा आहे तुम्हाला. ओके. सो व्हॉट द थिंग वी हॅव टू डू, व्हॉट द थिंग वी हॅव टू एक्झिक्यूट. सो हिअर admin num1 and num2 is equals to double quotes admin. Okay, bracket complete colon print in bracket valid user. Okay, else invalid colon print invalid user. Okay, so how we can run, how we can execute, here we no need to use the and, we have to use the and only. Yeah? Then run it again. Here you need a equals to and we can execute. Am I clear, guys? Yes sir. Cleared all of you? Yes. Okay na? Yes sir. So likewise we can work out, likewise we can execute. Go fast. Then I will tell you how we can go for the grid system, how we can align the registration form accordingly to the rows and columns. हेलो सर. Yes बेटा. तो ये वाले कोड में प्रिंट num3 का यूज नहीं है फिर भी. नहीं, you can remove it, it's not like that. तो एरर थ्रो नहीं होगा क्या? num3 को एक वेरिएबल ले लेगा, इट वॉन्ट कॉज एरर. बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रिंट करते हो तो कोई भी एरर वेरिएबल यूज हो जाता है. नो इश्यूज अबाउट दैट वन. क्लियर? यस सर. Let me know once it is done. Yes sir. Done sir. Done all of you? Done na? Now I just want to go for the execution of a simple thing, that I want to align these text boxes into rows and columns. So how we can use? So for that purpose we have to use the grid system. Let me check once, let me recall, because I also forget, because I have not worked out with a lot of days. Just a minute. Grid. See, अब अगर मैं यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ, ओके. So I write down here L1 is equals to, let's say T1 dot label label in bracket top, okay, and write down L1 dot pack opening bracket closing bracket, and here I am just passing text is equals to just simple I am going to be passing here enter your name, then write down and run.
So what the output we are getting? We are just getting one label, enter your name, and just getting this text box. Now what I want to do, I want to use the grid system over here. Okay, grid system means what? मला काय करायचं ना, हे थोडंसं प्रॉपरली अरेंज करायचं आहे, सो दॅट की इथे जसं भेटतं ना आपल्याला की हा टेक्स्ट बॉक्स लेबल वेगळं भेटतं आहे आणि टेक्स्ट बॉक्स वेगळा भेटतो आहे. ओके, सो मला काय पाहिजे ना, आय वॉन्ट दिस ऑल ऑन टू द सेम लाईन. मला हे सगळं ना एका लाईनला पाहिजे, म्हणजे जसं रजिस्ट्रेशन फॉर्म असतो ना तसा आपला फॉर्म दिसायला पाहिजे. दॅट आय वॉन्ट टू वर्कआउट. सो हिअर what we can do, what we can execute. So here to go for its execution we have to go for the simple one. इथे आपला काय करायचं आहे पहा, वी हॅव टू यूज द ग्रेड सिस्टम. L1 डॉट पॅकला मी काढून टाकेन. इथे मी लिहेल ग्रीड. वी हॅव टू पास हिअर रो इज इक्वल्स टू समथिंग अँड कॉमा कॉलम इज इक्वल्स टू समथिंग. ओके, वी हॅव टू पास हिअर रो इज इक्वल्स टू समथिंग अँड कॉलम इज इक्वल्स टू समथिंग. सो हाऊ वी कॅन वर्कआउट? सो आय वॉन्ट इट ऑन फर्स्ट रो and first column. I want it on first row and first column. So what is the output we are getting? Let's see what it says. Geometry pack inside. Yeah, we need to remove this pack statement. If you are using, see, जर तुम्ही ग्रिड सिस्टम वापरत असाल तर तुम्ही पॅक सिस्टम यूज करू शकत नाही. मी लिहिलं इथे L1 डॉट ग्रीड रो 1 कॉलम 1 आणि हा जो टेक्स्ट बॉक्स आहे मला एक्झॅक्टली त्याच्या समोर पाहिजे, म्हणून मी लिहितोय E1 डॉट ग्रीड रो कुठली तर पहिलीच रो कॉमा कॉलम कुठला तर सेकंड कॉलम. आय वॉन्ट द सेकंड कॉलम, म्हणजे त्या पहिल्या रोच्या सेकंड कॉलममध्ये टेक्स्ट बॉक्स आला पाहिजे आणि पहिल्या रोच्या फर्स्ट कॉलममध्ये तुम्हाला लेबल भेटलं पाहिजे. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू बी डू हिअर, इफ आय रन दिस, व्हॉट इज आउटपुट आय एम गेटिंग? सी, एंटर युअर नेम. एम आय क्लिअर हाऊ वी कॅन अरेंज? Yes, sir. काय बोलतोय? Yes, सो आय जस्ट राईट डाऊन हिअर एंटर युअर नेम. If I want to go for applying the same kind of grid system, we call it as a grid system. Grid म्हणजे तुम्ही रोज आणि कॉलम्सच्या वेळी त्याला ऑर्गनाइज करू शकता, रोज आणि कॉलम्सच्या वेळी त्याला तुम्ही वर्कआउट करू शकता. वी कॉल इट एज अन ग्रीड सिस्टम. ओके, वी कॉल इट एज अन ग्रीड सिस्टम. सो हाऊ वी कॅन वर्कआउट, हाऊ वी कॅन एक्झिक्यूट? सो वी आर जस्ट वर्कआउट विथ द सिम्पल वन L1 डॉट ग्रीड. नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर E2 डॉट grid grid in bracket grid grid in bracket again I am write down here row is equals to what? Row is equals to again 2 comma column, column is equals to 2. Row is equals to 2, column is equals to 2. Row is equals to 2, column is equals to 2. Then as we write down the thing like this one, how we can proceed for the next one? आता यालाच आपण कसं वर्कआउट करू, कसं एक्झिक्यूट करू? So here as I write down the grid system, I want the second label properly now. So how I can write down the second label? L2 is equals to, just write down T1 dot label in bracket top comma text is equals to enter contact. Okay, enter contact, and then we are write down here L2 dot grid in bracket we have to pass again row. So I am passing here row 2 comma column first, column column 1. ओके, आणि इथे आपण काय घेतलं आहे? टेक्स्ट बॉक्स घेतला आहे, ज्याला रो 2 दिला आहे आणि कॉलम 2 दिला आहे. सो हाऊ इट विल बी लुक लाईक? सी, गेटिंग माय पॉइंट गाइज? Yes, sir. Okay ना, likewise we can work out, likewise we can execute. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Go fast, your turn. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट.
just create a prop on tomorrow with the MySQL database at same time. Till bye bye, good night, take care.